सब अच्छा मतलब मस्त चल रहा है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी लास्ट घर में हुई थी है इधर, और इट्स लाइक कुआं है और खाई है। रोल making our Christmas memories. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video of Vlogmas 2022. आज के वीडियो में मैं चैन से बैठ के ये मेकअप लुक करने वाली हूँ. It's a super glam, very wedding and शादी appropriate makeup look, and I'm also going to answer a lot of questions that you all have for me about my personal life. Even though I share so much in vlogs, you all still have so many questions for me. It's a super personal Q&A. If this is the first time you've come onto my channel, then hi, I'm Sara. I make beauty and lifestyle videos here on YouTube. Take a moment, hit that subscribe button, join the Sara squad. I'm sure you'll love it here. And also don't forget to hit the bell icon right next to it so that every time I upload a video, you get notified. And with that, we can dive straight into this. Okay, we know the drill. I'm going to read my questions, do my makeup. So the first question is, where is Ishu and Sabrina Dee going? They are gone to UK. That's where my Jiju's transfer has happened. So both of them are now in UK. Far away from us. Ishu probably doesn't even understand where they are, but yeah, he understands कि वो लोग अभी दूर चले गए. I'm gonna do something that's more long wearing ताकि आप लोग को ये wedding के लिए again बहुत recommendations मिल जाएगी wedding season के लिए. तो I'm first using the Clinique's Even Better Fresh Foundation, one pump of this. ये मेरा shade है इसमें WN94 Deep Neutral, and this is actually a really good shade match for me. और उसके साथ I'm mixing the Fenty Beauty 370 warm. Again, this is also a very good shade match. ये थोड़ा matte है. I know a lot of people are asking me, आपने makeup recommendations देना बंद कर दिया, and my long form videos have stopped. My long form makeup videos have stopped. That is because it doesn't work that much anymore, guys. Like, if I just do makeup recommendations, even last year जब मैंने अपना end of the year makeup recommendations video किया था, barely any views were garnered, and in the long run I have to see कि मेरी audience क्या enjoy कर रही है, क्या ज़्यादा देख रही है, and do more of that. And I think in the past year सबसे ज़्यादा views, watch time, love has come for my vlogs, and that's the reason why I work so much towards my vlogs. I give you all more consistent vlogs. I vlog almost every single day, and club all of that together and make videos for y'all. Also, another thing is that videos on beauty work better for me in shorts. तो मैं shorts में आपको जितना हो सके recommendations देती हूँ, नई चीज़ें try करती हूँ, reviews करती हूँ, and makeup looks भी, makeup removal भी, skin care, everything of makeup and beauty. I have now shifted more towards short form, but I do still love doing this. Like, I love doing my makeup, chatting with you all of that. Lot of people have asked me how's the new experience in the new house. So taking that question, I would say it's nice. The work energy is really good. Starting me to adjust into this house was very difficult. I would say for a good 2 weeks, 3 weeks, I was having a crying session every day. Like, almost every day something would throw me off balance और मैं रो पड़ती थी. मतलब literally मुझसे नहीं हो रहा था. And the amount of times मैंने अपने like लोगों को बोला होगा कि मुझसे नहीं हो रहा है. Like, I've told Pooja, I've told Sakshi, I've told Mama कि अब मुझसे बस नहीं हो रहा है, बिकॉज इट बिकेम टू मच ऑल एट वंस. ऑलरेडी घर शिफ्ट करना था, बहुत सारा कंटेंट का काम था बिकॉज इट वाज हेवी सीजन पीरियड. इम्पल्स का काम तो रहता ही है, साथ ही साथ सब कुछ अपना मूव करो, लाइक योर लाइफ एज वेल एज योर ऑफिस, एंड गेटिंग अ हाउस हेल्प, ट्रेनिंग दैट हाउस हेल्प, एंड एट द सेम टाइम गेटिंग लाइक यूज टू नॉट ईटिंग ओवर एट द एंड ऑफ लॉन्ग डेज, गोइंग बैक टू दैट हाउस टू जस्ट गेट माई फूड sorted, and all of that I'm not used to yet, and I get very tired at the end of my work day. So that convenience that I had of ऊपर नीचे is fully gone. तो बहुत जल्दी बहुत सारे changes हो गए. तो उसके बाद अगर कुछ भी मेरी लाइफ में सही नहीं हो रहा था ना, अगर कुछ भी off balance जाता था, I used to literally break down and start crying, and it was very difficult at first. But slowly I've adapted. Everything doesn't happen like overnight. I couldn't expect this transition to just happen overnight. Slowly and steadily I sort of adapted, and now I feel like now I'm in a rhythm. Now I know कि I finish my work by 8:30, 9 o'clock, and then I go for dinner over there. I'm taking a little bit more foundation for my neck because मेरी neck cover नहीं हुई है अभी उतने foundation में. And yeah, I think with the right support system and with the right time, you have to give yourself time to be able to adapt to all these changes. I could not have expected कि overnight मैं एक नई जगह पे नया सामान लेके आऊँ और अपना काम, बिजनेस, अपना लाइफ, पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग इमीडिएटली अडेप्ट हो जाएगी. इट इज़ लाइक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नेचर, एंड रिमूविंग मी आउट ऑफ माई comfort zone and putting me in a new setting was going to be challenging. I always knew it.
बट टू फेस इट फर्स्ट हैंड वॉज डिफिकल्ट. आई लेट माई सेल्फ क्राई, यू नो. जब भी मुझे ऐसा बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है या बहुत रोना आता है या बहुत मतलब मैं वीक हो जाती हूँ, तो आई लेट माई सेल्फ क्राई. आई डू सीक आउट हेल्प. आई एक्टिवली टेल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हेन आई कांट डू इट एनी मोर. आई डोंट पुश माई सेल्फ बियॉन्ड माई बाउंड्रीज. आई एम नॉट अ रोबोट. आई डू नॉट stay positive all the time. You all just don't see the negative side. Of course, if I'm crying, I'm not going to lift my camera and vlog it. Sometimes when naturally मेरे आंसू आ जाते, जैसे घर शिफ्ट हुआ था, सबरीना चली गई थी, और naturally जैसे cameras rolling and my tears come, that probably makes it to vlogs. But other than that, when I'm having like a mental breakdown, nobody's lifting the camera and capturing it. You know, it's we are all in it to feel better, make me feel better, and just recover from that moment. So yeah, I'm not positive all the time. I just try to show you all the best side of my life or the portion where I'm coping, because nobody wants to come on the internet. I feel like देखो जितना रियल मैं रह सकती हूँ मैं रहती हूँ, बट उससे ज़्यादा मुझे ये भी समझने की ज़रूरत है, और मैं समझती भी हूँ कि मेरे लिए आप लोग टीवी देखते हो या मूवी देखते हो या कुछ भी देखते हो ऐसे एंटरटेनमेंट के जैसे मेरे वीडियोस देखते हो, और 30 मिनट आपकी लाइफ में से निकाल के मेरे वीडियोस देख रहे हो, उसमें आई डोंट वांट यू ऑल टू सिट एंड लिसन टू माय सैड स्टोरी, सॉब स्टोरी और क्राई विथ मी ऑल द टाइम. यू नो, आई वांट यू ऑल टू बी हैप्पी, गेट द पॉजिटिव दिस. दैट्स व्हाई आई आल्सो ट्राई टू ओनली शेयर द एंटरटेनिंग पार्ट्स, द हैप्पी पार्ट्स विथ माई ऑडियंस, सो दैट तुम लोग देखो वो 30 मिनट है, तुम लोग को भी खुशी मिले. ऐसा ना हो कि मेरे वीडियोस देख के आप लोग और दुखी हो रहे हो, वैसे भी आपका दिन बुरा जा रहा होगा या आपके दिन में कुछ तकलीफ थी, एंड देन यू वॉच्ड माई वीडियो एंड यू फेल्ट इवन मोर सैड. दैट्स द वर्स्ट बीटी आई वुड वांट टू गिव एनी ऑफ माई ऑडियंस, विच इज व्हाई आई डोंट लेट द सैड पोर्शंस लेट इट मेक टू द व्लॉग very often, unless it's like a really life changing moment for me, like my friends were leaving or my sister's leaving. All of those are emotional moments that I want you all to be a part of. How do you convince yourself to spend so much on things? Even I am earning and it takes a lot of time. I totally understand where you're coming from, क्योंकि जब starting में मैं कमाने लगी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितना पैसा is okay for me to spend, कितने खर्चे में कर सकती हूँ, कितनी savings करनी चाहिए ideally. And even today I would say there's no like definite amount, but धीरे धीरे with time you like start spending. All of us, मेरे सारे फ्रेंड्स भी हम लोग सब साथ में कमाने लगे थे, तो हम सबको स्टार्टिंग में नहीं समझता था कि सडनली चीज़ें एक तो बहुत महंगी भी हो गई, और मम्मी पापा के खर्चे से जब खुद के खर्चे पे शिफ्ट हो रहे हो, देन यू रियलाइज कि कितना लाइफ महंगा है, एंड हाउ डिड दे मैनेज, बिकॉज दे यूज टू डू देयर ओन एक्सपेंसेस, घर के खर्चे एंड हमारे खर्चे, और नाउ वी आर ओनली डूइंग अपने खर्चे, और इतना भारी पड़ रहा है. सो ऑफकोर्स द ट्रांजिशन इज डिफिकल्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच इज ओके फॉर यू टू स्पेंड, बट then again you also have to tell yourself things like you're earning for a lifestyle. You need to spend on, if I want to go to a restaurant, पहले आई कुड नॉट लाइक जस्ट गेट अप एंड गो टू ऑल ऑफ दीज फैंसी रेस्टोरेंट्स जो मैं अभी इतना हाल ही में फ्रीक्वेंटली चली जाती हूँ. अभी तो मैं लोगों को भी लेके जाती हूँ, एंड आई यू नो आई गिव ट्रीट सो ऑफन बिकॉज आई लव गोइंग आउट एंड डाइनिंग. आई लव अ डाइनिंग एक्सपीरियंस. मुझे पहले से बहुत शौक था लाइक बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाना एंड वीकेंड्स पे जाना एंड ऑल दैट, बट आई वुड नेवर गो इन कॉलेज. लाइक इन कॉलेज इन 11th and 12th आई यूज्ड टू गो टू दीज क्लासेस साइंस के लिए, एंड देयर really like the group I used to chill with was really bougie, and their parents were well to do, so they used to go to these cafes, restaurants quite often, and वो लोग easily जा पाते थे. बट मेरी पॉकेट मनी में वो पुरता ही नहीं था. मतलब मैं कभी भी एक रेस्टोरेंट भी नहीं जा पाती थी बिकॉज आई कुड नॉट have allowed myself to go there and do all my other खर्चाज, because मेरी पॉकेट मनी फिक्स थी, और उसमें मुझे ट्रैवल, रेगुलर फूड या ऐसा फ्रैंकी सैंडविच पानी पूरी खा लिया तो दैट तो आई हैड टू ऑफकोर्स कवर, एंड दैट मच आई टू अलाउ माई सेल्फ. बट नो फैंसी रेस्टोरेंट्स, नो कैफेज यूज टू गेट कवर्ड. अगर फैमिली के साथ गए तो अलग बात है, बट फ्रेंड्स के साथ अलग से जाने आई वुड ईदर हैव टू एग्जॉस्ट माई पॉकेट मनी, या फिर मम्मी के साथ झगड़े करके और थोड़ा पैसा निकालना पड़ता था यहाँ वहाँ से, विच यूज टू नॉट बी. मम्मी के बजट में भी वो फिट नहीं होता था, और वो मंथली खर्चे में मम्मी ने अकाउंट नहीं किया था. सो इट वाज लिटरली लाइक दोज periods of time when I was in 11th and 12th. I've seen that, you know. From that I would say today for me luxury is just to get up and go to a dining by myself and give myself that lifestyle. So that is where I want to spend my money. That is where I was like कुछ भी हो जाए मुझे ये तो करना है. मुझे रेस्टोरेंट में जाने बहुत मज़ा आती है, एंड आई लाइक टू गो एंड डाइन इन गुड रेस्टोरेंट्स, एंड आई हैव सर्टेन रेस्टोरेंट्स दैट आई रियली लाइक द फूड ऑफ, सो आई विल गो. टुडे आई लव दैट आई कुड डू फॉर माई सेल्फ, कि अभी मैं अपनी कमाई से इतना तो कर सकती हूँ. मैं कितना भी कमाऊँ कितना भी कम कमाऊँ, मुझे ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि मैं रेस्टोरेंट्स में जाके डाइन कर सकूँ. सो आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली आई सॉर्ट ऑफ केप्ट बेंचमार्क्स फॉर मी, कि आई नीड टू अंडरस्टैंड, सी द लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड द लेवल ऑफ स्पेंडिंग इज सब्जेक्ट टू एवरी वन. व्हेन आई यूज्ड टू चिल इन 11th and 12th विद माई फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू टेल देम ऑल्सो कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम बिकॉज आई डोंट हैव मनी. आई यूज्ड टू नॉट बी, मैं कभी ऐसा शर्माती नहीं थी बोलने के लिए कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती. सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू दैट टाइम गिव मी लाइक तेरे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, यू गो विथ योर अदर फ्रेंड्स, एंड ऑल माई अदर फ्रेंड्स गो टू मैकडोनल्ड्स, यू ऑल वांट टू गो टू दिस XYZ कैफे. सो
you know, I should tell them also कि I can go to McDonald's with y'all, but I cannot go to this cafe. And I just said upfront very this, because मेरा पैसा नहीं, मेरे माँ बाप का पैसा है, तभी उनके पास एकदम लिमिटेड पैसा था, और अगर मेरा पैसा मैं खुद पे स्पेंड कर रही हूँ तो ठीक है, उनका पैसा मेरे पे स्पेंड करने एक्स्ट्रा हरकतों पे इज नॉट ओके. या यू नीड टू कीप बाउंड्रीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लग्जरी फॉर यू, व्हाट आर यू वर्किंग टुवर्ड्स एंड व्हाट इज योर लिमिट. लाइक मुझे इतना तो अपने पे करना ही है, फिर ऊपर का देख लूंगी. लाइक ये महीने अगर मैंने शॉपिंग नहीं की तो चलेगा, बट मुझे ये रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, ये नए कैफे में चेकआउट करना है, ये डेट नाइट पे जाना है, इसके लिए मुझे पैसा रखना है. सो यू कैन स्लोली एंड स्टडीली लर्न लाइक दैट एंड देन स्टार्ट बजटिंग एंड अंडरस्टैंड कि ओके दिस मच फॉर मी टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ इज ओके. लाइक ऑन द मंथ इफ आई स्पेंड वे टू मच ऑन ईटिंग आउट, उसका भी लिमिट है मेरे लिए खुद के लिए. इफ आई स्पेंड लाइक अबव एन XYZ, आई एम लाइक ओके डन सारा, नेक्स्ट मंथ you can only go out for date night 2 times. Date night for me is like regular. If I go alone also to eat out as date night, it need not be with somebody else. Your journey with fibromyalgia, how do you cope with the flare-ups? So people who followed me for a very long time or who catch it in my vlogs know that 12th standard में मुझे fibromyalgia detect हुआ था, which was like a nerve neuromuscular condition. तभी बहुत, जब जैसी diagnose हुआ था तभी मेरी हालत बहुत ख़राब थी. Like I was on 6 months for bed rest. I had taken multiple doctor's appointments, multiple medicines. मतलब it was a worst phase of my life so far, I would say. How do I cope with the flare up? Basically there's no like permanent solution for fibromyalgia, but whenever it got worse, the last treatment I took was in third year med school. तो I think 3 साल पहले I took my last treatment, और उसमें they had given me muscle relaxant injections in the back. So I took 15 injections in the back, like MFR injection. तो उससे muscles एकदम ज़्यादा relax हो गए. उसके बाद I did physiotherapy and retrained my full muscle again. So जितने भी मेरे bad postures, bad muscle mechanisms और जितना भी था वो सब fix हो गया. और doctor I consulted who has helped me majorly, 2 doctors actually. PP Ashok is a neurologist. He's a very good neurologist, Hinduja का. And Namita Purohit, I think her name is. She's in Ambani and she's a pain specialist. तो वो specially pain specialty में ही करते हैं. तो जितने भी ये pain disorders है, even post cancer pain जो होता है या post herpetic pain जो होता है, जो भी pain वाले disorders होते हैं उसमें she specializes. तो उन्होंने मेरी बहुत रिकवरी में हेल्प की थी इन द पोस्ट फ्लेयर अप्स. आफ्टर दैट आई हैव बीन माशाल्लाह रियली गुड एंड never really had a full blown flare up, because then now I do my gym regularly, I go to the gym, I eat properly. Even though I go out and eat so much, I make sure जो भी मैं घर पे खा रही हूँ वो it's like clean food. I take a lot of liquid diet, like lots of fluid, water, good छाछ, ये सब मतलब ठंडा रखने बॉडी. एंड स्ट्रेस अगर मेरा ओवर टाइम हो गया, ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, जैसे कि आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, आई कैप आउट. आई एम लाइक बस अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा. So to be able to draw the line on all these things is like me reducing the triggers for my flare up. मेरे triggers यही सब थे: stress, bad food, bad sleeping habits. They are not good for anybody. Also cause a lot of problems for me. And वो सब ठीक करने से my flare ups have reduced, and also the treatment I took from these doctors. So yeah, you need proper medical intervention for fibromyalgia. Everybody's fibromyalgia is different. सबके symptoms अलग होते हैं. किसी को भी मतलब तभी मैंने बहुत support groups join किए थे, international support groups भी join किए थे, online मिलते हैं. You can just join these free groups and talk to people. I should talk to people. I should understand कि everybody's symptoms are different. Nobody has the same symptoms. So you can't really take my treatment and apply to you. But you have to identify कि आपके triggers कौन से, and then slowly and steadily, you know, repair those triggers in your lifestyle. Want to know if Sakshi went to Singapore on your expenses or herself or YouTube? Lot of people have asked this. YouTube had invited me and my +1 was Sakshi. तो जो भी हमारा stay था और हमारा food था, everything was taken care of by YouTube in the 4 days. उसके एडिशनली जो हम घूमने के लिए 3 दिन एक्सटेंशन लिए थे, उसमें मैंने अपना खर्चा की और साक्षी ने अपना खर्चा की. अपार्ट फ्रॉम द लास्ट डे जो मरीना बे सैंड्स में था, वो दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू साक्षी. जो +1 था उसका फ्लाइट आई हैड टू डू. सो साक्षी's फ्लाइट वाज डन बाय मी एंड टू एंड फ्रो जो था, बट मेरा टू एंड फ्रो वाज डन बाय यूट्यूब. सो दैट्स लाइक अ overall. When do you feel like you want to settle in life and get married or have a partner? Lots of love from Hyderabad. आई डोंट नो वट द मीनिंग ऑफ सेटल इज. अगर आप मेरी लाइफ आज भी उठा के देखो तो मुझे काफ़ी सेटल्ड ही फील होता है, ऐसा अनसेटलिंग वाला फीलिंग नहीं है. बिकॉज यू ओनली फील सेटल्ड व्हेन यू आर सिक्योर, एंड आई फील प्रिटी सिक्योर इन माई सेल्फ राइट नाउ ऑल्सो. आई एम ओके विथ माई लाइफ. आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव माई टीम, आई लव माई फैमिली, आई लव माई हाउस. सब अच्छा मतलब मस्त चल रहा है सब. मुझे कुछ भी इनसिक्योर है, अनसेटलिंग नहीं लग रहा है कि आई नीड टू ब्रिंग अनदर पर्सन, गेट मैरिड टू दैट पर्सन एंड देन
say that okay, I'm settled. In fact, I'm so scared कि somebody else will come third person in my life and पूरा जो settled है ना वो पूरा ऊपर नीचे unsettled हो जाएगा. So unless and until I find somebody, I will know. For me, there is no age to get married. There was never an age to get married. I was not brought up like that. I don't feel like, okay, if I'm 30, I have to be married. If I'm 40, I have to be married. If I'm not married also, I'm pretty okay with it. Okay, I know Shadi content does really well, but I will not get married for that. बस सारे friends शादी कर ले, I'll be okay with that. When and where is your next trip? So excited. Even I am really excited. I'm also really fat out. I'm telling you guys, this is going to be an adventure of a lifetime for me. I'm really scared for this trip. When and where क्या है सब कुछ आपको पता चल जाएगा when I go there. I'm still planning. Can you believe it? Like it's literally in 20 odd days that I have to leave. Less than 20 days. और अभी तक मेरी सारी bookings भी नहीं हुई है. I am so prepared for this. Cannot even tell you. Are you really happy now at this stage of life where you are? Mashallah, genuinely I am. I'm very happy. I would say happiness is a choice. Like I said, you need to just decide where and what makes you happy. A lot of things in my life make me happy. My dog, my family, my friends, my team, my job. All of this makes me happy. So whenever I'm upset, I actually remind myself कि मेरे पास ये सब है and I should be grateful. And it's okay to still be ungrateful. I know a lot of people might look like they have everything, but उन लोग फिर भी दुखी है, फिर भी sad है. But that probably is something internally that is bothering them. After this house is settled and everything, there is nothing internally that is bothering me. It is difficult, but it is not sad or it's not provoking unhappiness in me. I'm happy. I'm good. How was your first work trip? PS, you are so gorgeous. Thank you so much. My first work trip was really hectic. It was madness. Like वो 4 दिन के बाद ना मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो गया. Like इतना hectic था summit. Like it was too exhausting for me personally. मैं कितना काम कर सकती हूँ you also know. And मेरी capability माशाल्लाह से काफ़ी है. But it was like from the time you're already traveling and then from the time you land, you start work. And in new environments with new people, you've never met these people and it was a very good experience. It has taught me a lot क्योंकि आगे जाके अभी कभी भी ऐसा होगा तो I'll be much more prepared. जो travel trips हो गए या international trips हो गए, I will have a better experience. काफ़ी कुछ सीखने मिला उधर. मतलब इतना कुछ सीखा है मैंने as a working professional, but it was also very exhausting but very rewarding in general. Like overall it was amazing. अगर काम के हिसाब से देखो, then I loved every experience because the people I got to meet over there were fab. Like all of the creators, all the international creators, all the Indian creators, all the team from YouTube, amazing people. Like YouTube team is fab. Okay, मुझे पहले से पता था कि YouTube team बहुत अच्छी है, but in person I met so many international members also of the team and everybody is a sweetheart. Like हर एक dinner YouTube का was special and had some like core memories I've made in Singapore and it was very good. Congratulations on Impulse completing 1 year. Thank you. When you're all settled in after your work comes in a proper routine, any plans of you getting married again? कितने लोगों को शादी की पंचायत. तुम लोगों से लहंगा देखने का तो मैं खरीद के अभी पहन सकती हूँ. I don't have to get married for शादी. Did Fudge face any problems staying at your mom's place and you being so busy outside all day long? Not really. Yet I don't see any behavioral changes in Fudge अभी तक because actually ये घर में ना काफ़ी भरा भरा ही रहता है. All the time team members are coming in and out and Satyam has made a routine for Fudge to go down for walk and take him to mummy's house and all. So उसने भी Fudge का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहा है. One thing he's doing very well is take care of Fudge. So I like that. Fudge is in a routine. Like he gets up, he gets breakfast, he goes down for his walk, then he goes to mummy's house in the evening and I also go to mummy's house and पूरा दिन team वाले आते रहते तो he's busy with the team members, he plays with them and all. And otherwise he's a chill dog. So he likes people around him. उसको ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यही लोग चाहिए. उसको उसके पसंद के लोग चाहिए and he likes all my team members. For highlighter, I'm using the Verified Citrine highlighter. I love this one. It's a very good shade and it's very buildable also. How did you do your internship? I am a medical intern and this year feels longer than any other. Trust me, internship was the toughest because उसमें काम करना पड़ता है. Like as a student, you can still like bail on certain patients. You can like see less patients because you're still a student. You can
give it to your interns and then you become that intern and that's the worst. मेरी तो पूरी internship मेरे YouTube channel पे ही है because internship के time पे I was like a full fledged lifestyle creator ही बन गई थी मैं, और तब तक I was posting regular vlogs and all, तो कुछ my first days there and बीच में it was there and I used to come back home and shoot videos and all. It was the hardest. It is the longest year also because we get very limited holidays. In internship you cannot take offs at all. You have a certain number of holidays that you can take and उससे ज़्यादा लिया तो you have to compensate after the internship is over. So either or it's like कुआं है और खाई है, कुछ भी in between नहीं है, but somehow you get through it. Time passes and you get through it. Do you think this year was a lot for you? I mean, it can be overwhelming to grow so fast. No Nazar. Thank you for this question. And yes, no Nazar. Thu. But yes, it was very difficult. It was very overwhelming. Like after a point, I was just like, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये मतलब, you know, you want something, and then you're just like, it's great that it's happening for me, but I cannot process it all at once. So like for example, I'll give you a milestone this also. Like जब मेरा बहुत growth होने लगा YouTube पे, everyone was like, oh 1 million by the end of the year, 1 million by the end. But मैंने खुद से 1 million by the end of the year रखा नहीं था. मेरी bucket list में 500K था. उसके हिसाब से मैंने अपना काम plan out की थी. उतना हो गया. उसके बाद I was like, ठीक है, I'm good for the year. I've achieved my goals and I'm good. I'm happy. I'm very happy. But then others have these unrealistic expectations from you, and now I'm not going to hit 1 million by the end of the year, so you feel guilty somewhere that you've not met others' expectations. But then I had to sit myself down and be like, listen, मैं खुद के लिए काम कर रही हूँ, खुद का हो गया, मेरा bucket list is good, अगला साल भी है, and I have a lot more years ahead of me. I want to be a लंबी रेस का घोड़ा. I cannot hit 1 million this year and just sit down. सब बंद करके बैठ नहीं जाना है ना, अगले साल भी काम करना है. So it's fine, and it is overwhelming, very overwhelming. A lot of things, even like Singapore and all. Like I say, it was hectic. Come back again, you get to work, then you shift. Mashallah, so much happened for me. I'm very grateful, and I keep telling myself that I have to be grateful, but it is overwhelming, no doubt. There is only so much that one person can deal with, and after a point I just can't. But I'm glad that in all of this, just my support system, like my team is the reason why I could like stay sane through a lot of the moments and milestones. Like Pooja, Sakshi, all of these people are just hardcore there, that they know ke theek hai, we'll deal with it, we'll manage it and all of that. And Amit पीछे से is like, हाँ हम तो for granted है. So of course Amit and Dikshita are also, all of them, like अभी मैं नाम लेने लगूँ तो मतलब list endless है, but सभी लोगों की वजह से ऐसा ठीक है वाला फीलिंग आता है कि हो जाएगा यार, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जितना भी है सब कुछ सही से टाइम पे हो जाएगा. Which is why I say that the people around you, I'm a very people person. I need good energy around me, and my energy, my positivity and however I am is dictated by the people around me. If you put a negative, very irritating person around me who's all the time like, अरे नहीं हो रहा है, अरे ये नहीं होगा, अरे, I'm like, भाई तू मेरे से नहीं होएगा, तू निकल. Like I need people who have that attitude कि हाँ करके दिखाएंगे, like ऐसा वाला, वो बॉब द बिल्डर वाला. तो मेरी पूरी टीम ऐसी है, ऐसा करके दिखाएंगे वाला. तो वो एनर्जी में even I can thrive. Like I'm like, okay, we can do it. We can all do it together. It's not going to be easy, but we will handle it. Why aren't you trying for Shark Tank India? I mean, I'm not a reality TV show person. Can I just say that? वो कुछ भी हो जाए, Shark Tank हो, मतलब अगर मुझे raise करना है पैसा, I will go for the normal raising route through agencies or whatever the system is. But I will not go on a reality show, present my metrics and be like, लाओ पैसा दो. I love watching it. It's entertaining max, no doubt. You started your dream brand of coffee. Now what more do you dream of having? Nothing, bro, nothing. I'm good, thanks. All my dreams, I'm very good. Thank you very much. Would you like to have another dog or maybe a pet? I've been following you since your 1 lakh love from Bangladesh. Thank you so much. No, I wouldn't want to have another pet because Fudge also does not like other dogs. So I would not want to disrupt his peace of mind and make it hard on him. उसको कोई भी दूसरा जानवर नहीं पसंद. उसको बिल्ली, कुत्ते, तोता भी था हम लोग के पास, उसको भी उसने भगा दिया. उसको नहीं पसंद है बिल्कुल भी. उसको सब अटेंशन खुद के लिए चाहिए. He's a very, वो एक बच्चा होता है ना, उसको सब प्यार लाड करते हैं. वो हमारे घर का वही Rent of your new house. Yes, I realized I did not declare. So the rent of this house, I will not give exact figure, is roughly around 60,000, 20,000 more than my last house. But also to realize कि अभी COVID खत्म हो गया है और मुंबई में rents बहुत बढ़ गए because सारे commercials, offices, सब कुछ वापस खुल गया है. So now in general only जितने भी मैं rents देख रही थी सब कुछ 85,000, 1 lakh, 1.5 lakh ऐसे rents थे एकदम fancy houses के. ये थोड़ा पुरानी building में मिल गया इसीलिए it's like lesser but it's still
quite steep as opposed to my last trend. How to control yourself when you have heartbreaks, trust break, all leaving friends, going away, all of that. You cry, bro. You just cry your feelings out and then you move on. You cry a river, build a bridge and move on. मैंने कहीं तो ये पढ़ा था and it actually applies really well because क्या कर सकते हैं? You cannot control people breaking your heart. You cannot control people breaking your trust. And also, like, you know, stop trusting people. Like, just because one person broke my trust, मैं सारे लोगों पे, इंसानियत पे give up कर दूंगी, ऐसा नहीं होता है. ऐसी life नहीं जी जाती है. So you just remove that person from your life, cry over it, and then you move on with the other people in your life. Or make new friends, make new connections, make new whatever it is. And those people can be anybody. They can be your family, they can be your friends, they can be your people you work with. I'm just taking this dark brown shade and making like an eyeliner of sorts. I like this smoked out look, very soft, smoked out, not too harsh. I'm thinking I should do glitter. How many of y'all have invites to weddings? Dude, मेरे पास एक भी शादी का invite नहीं है. Nobody wants to have me at their wedding, even though I have clothes also to wear. They're just scared I'll dress up better than them. Vidya has asked me, are you planning to expand the coffee line to include pods or fresh grounds in addition to instant? So not really, because Impulse का मेरा full motto था instant everything, okay? Experience the hustle हमारा tagline है तो fast everything that can be done fast but in good taste, like taste compromise नहीं करके. That's why we did instant hot chocolate and हर एक चीज़ जो हम करेंगे will be like fast. That's what you can expect from Impulse, so that you don't have to. It's on the go, it's convenient, and we'll try to give you the best quality जो हम instant में दे सकते हैं. Dating someone is the next question. Lot of relationship questions. Absolutely. ये सब पागलपन में you think I have time to go and get a boyfriend or get somebody? No, there's absolutely nothing going on in that area of my life. As sad as it is, that is something I don't have time for. This is Swiss Beauty's liquid eyeshadow in, I think, some glitter silver shade. I'm just gonna place it on the top of my lid and then diffuse it out because मुझे ज़्यादा भी glitter नहीं चाहिए. Very pretty glitter और बहुत easily blend भी हो जाता है. I think I'm gonna take some at the back of my hand and do this with a eyeshadow brush. I love how this looks. It's very like diffused, chunky, like बहुत चमकीला भी नहीं है. But I think I'm going to build up थोड़ा सा on this eye. Very universal look, हाँ guys. अगर आपको ये look कोई भी outfit पे पहना है आप पहन सकते हो. इवन वेस्टर्न गाउन वगैरह पे पहन सकते हो. ये सिर्फ इंडियन नहीं, अभी मैंने शादी इंडियन के हिसाब से बनाया है. पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस इन SSS 2.0, एब्सोल्युटली नन. देयर इज नो भूत ओवर हियर सो फार, बट या ऑल लॉट ऑफ यू आस्क्ड मी कि भूत का क्या किस्सा था और क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी लास्ट घर में हुई थी जो मैंने पहले नहीं बताई थी, बिकॉज when you're staying there you don't want to mess with the bhoot, but now I can. So basically what had happened is that what had happened is just then, okay, I generally do believe in paranormal stuff और मुझे ऐसा लगता है कि होते हैं, मतलब you know, if you believe in God, if you believe in good, there is bad also, but also सब भूत बुरे नहीं होते. Like I did not feel like that paranormal activity was negative in any way because that house made me feel very cozy and comfortable and welcoming. Like जब भी मेरे साथ कुछ भी बुरा होता था ना, I would be attracted to my house and want to run back to my house. Like जब लद्दाख में भी कुछ हुआ या ऐसा लगता था जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ मेरे साथ कुछ बुरा होता है, जैसे मैं घर में आती हूँ I feel very like taken care of. So that was the feeling. But where it all started was, so the first night basically I moved in. I had a sleepover with Purnima because मैं पहली बार ऐसा पूरे घर में अकेले सोने वाली थी, so she came over just to be with me. So that night, now Fudge, okay, Fudge is somebody who's very smart. He's a very smart dog and he understands and senses really well. तो उसको हम लोग ने पहले भी वो घर में लेके जाके we've made him use the bathroom and we've trained him to go to the bathroom to make susu and उधर पेपर डालते हैं and he's used to it. और क्योंकि वो घर मेरी मॉम डैड के घर के ऊपर ही था, तो जब वो घर बन भी रहा था and we were doing painting and all of that, we used to get him used to going to the bathroom all the time and he was very used to the space. But the first night we slept over them, उस रात को the light was off of the bathroom and Fudge goes in the bathroom and he goes in the area जब paper है and he starts barking. Like he looks at literally like the shower area and he starts barking and I'm like ये बंद नहीं हुआ है, he's not been locked in the bathroom, so what's up, you know, क्यों भौंक रहा है वो. So I go inside and I check
एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पेपर भी है, सब कुछ है. I'm like, go fudge make susu, go fudge make susu. No मतलब no. So what he's doing is basically in the shower area he's like sniffing ऐसा ऊपर नीचे and he would take 2 steps back and start barking. जैसे कि कोई खड़ा है, जैसे वो कभी नया इंसान आता है, आपने कभी व्लॉग में देखा होगा, if a new person comes he sniffs at the feet and then he'll look up and then he'll climb on that person if he likes the person. But यहाँ पे वो ऐसा sniff कर रहा था and he would take 2 steps back. And you know dogs have a sixth sense. Okay, dogs can really, and I have heard so many real stories of dogs seeing paranormal activity and sensing it and seeing ghosts and all of that. And मैंने बहुत किस्से सुने. तो आई वॉज लाइक पूर्णिमा एंड आई वॉज जस्ट लाइक क्या हो रहा है, मतलब. फिर मैं उसके साथ फज के साथ बाथरूम में गई. आई लॉक द बाथरूम, आई यूज द बाथरूम एंड आई टुक फज इनसाइड. आई वाज लाइक ठीक है मैं यूज़ कर रही हूँ बाथरूम तो वो भी यूज़ करेगा. नहीं, वो आके मेरे पास बैठ गया बाथरूम में, मेरे पैर के पास बैठ गया. ही डिडंट गो एंड मेक सुसु ओवर देयर नियर द पेपर जहाँ हम वो शावर एरिया में रखते थे. वो नहीं किया, मतलब नहीं किया. ही जस्ट केप्ट लाइक स्निफिंग अप, बार्किंग अप एंड देन टेकिंग 2 स्टेप्स बैक, जैसे कि वो डर रहा है वो इंसान से जो भी वो खड़ा है, जैसे शावर के अंडर कोई खड़ा था. एंड देन वी वर जस्ट लाइक लॉक द डोर. हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाते. तो पूर्वा वाज जस्ट लाइक दरवाजा बंद करते, सो जा, कुछ भी नहीं है. सो वी डिड दैट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दिस गाय हैज गॉन टू द बाथरूम. इन द मॉर्निंग इज फाइन. मॉर्निंग ही गोज टू द बाथरूम, ही डजंट bark, nothing. He'll just enter and he goes uses the bathroom as if nothing happened and it was fine. तो I was like ठीक है, कल रात को maybe he was just scared, पहली रात हम लोग सो रहे इसलिए. Again the next night, the night, only at night same behavior again. I was like रात को क्या हो रहा है, मतलब अभी ये रात को तो मैं अकेली थी, पूर्णिमा भी नहीं थी. So I messaged पूर्णिमा and I was like bro, तो she was just like दरवाजा बंद कर बाथरूम का and सो जा. Then after couple of days when it kept happening like 3-4 days later, he used to then use the other bathroom. रात के टाइम पे I put paper in the दूसरा वाला bathroom and started making him go to that bathroom in the night. And then after 3-4 days I did like dua in the house and I prayed to Mother Mary and I was like, Mother Mary protect me, whatever it is, like, you know, you declare that the house is yours. So I sort of told the ghost that hi, I'm Sarah, I am now living here, I'm new to this house, so be nice to me. ऐसा literally मैंने बात किया ऐसा हवा में and I genuinely felt like they listened because after that day Fudge just stopped looking in the bathroom and barking. As crazy as it sounds, this is exactly what happened. It was so real and that's why I did not want to talk about it while I stayed in that house. But it was a good paranormal. जो भी था ना, ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ हार्म किया उसने या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ वो घर में. आज तक माशाल्लाह से मेरे को एक खरोच भी नहीं आई वो घर में, कुछ भी. like nothing wrong happened to me physically or mentally or emotionally. I genuinely feel like that was a good like whoever it was, whatever spirit it was, it wished well for me. And ऐसा होता है, like you have good encounters and bad also, but that was definitely a good one. On a tight line with the Estee Lauder kajal, waterline outer side and tight line full. How did you deal with people commenting on your skin tone? I face the same and it affects me. ऐसे मुझे बहुत questions आए कि how do you deal with body acne, face acne, skin tone, body shame, ये सब. But after a point you just stop caring, guys. कब तक मतलब you all will keep thinking about लोग क्या कहेंगे, उन लोग वो लोगों के लिए थोड़ी ज़िंदगी जीनी है. तो after a point you have to stop giving any attention or any importance to these people. Like you all tell me कि haters पे ध्यान मत दो, they don't know about your life. All of that same applies to you all also. Okay, अगर you will think about what people are saying, then पूरी जिंदगी तुम वही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे और उस चक्कर में तो कभी अपनी लाइफ जी ही नहीं पाओगे. ऐसे ही करते करते बुढ़े हो जाओगे, फिनिश, खत्म, लाइफ ओवर. एक ही लाइफ मिलती है. आई बिलीव दैट ऑल्सो, यू गेट ओनली वन लाइफ. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. डू यू फील कंटेंट विथ वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ और यू विश टू गो अब्रॉड जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स? द अमाउंट ऑफ टाइम्स आई क्वेश्चन माई सेल्फ दिस इज unnatural, but I feel content. These are very two different answers. In myself, in my life, I feel content. But do I look at my friends going abroad and wish I also could go abroad like that? Also, yes. Sometimes I also feel like maybe I also was supposed to go abroad. Maybe that was the future for me. Maybe that is where I had to be. तो कभी-कभी even I feel like, you know, सबसे पहले तो मैं जाने वाली थी. हम लोग का हायरार्की में मेरी ग्रेजुएशन पढ़ाई कब का हो गई होती. अब तक तो मेरा मास्टर्स भी हो गया होता if COVID wouldn't have happened and life wouldn't have changed for me. But then I feel like there's still a lot of time for me. It's not like I would have gone abroad and been successful. You know, you never know what is meant for you. And so because I'm content over here, I would say till I'm happy here, till I'm successful here, till I'm able to make something for my career here in India, I'll continue to do so. But this day I feel like okay, it's not working for me anymore. अब नहीं हो रहा है, अब इधर कुछ भी मेरी दाल नहीं गल रही है basically.
then I will pack my boria bistar and go, and I will see where I can go abroad. So maybe someday, but they are two different questions. I do wish I could go, but I am also very content over here. How did your Impulse Coffee first anniversary go? It went really well. The party was so wholesome and nice, very nice. I love the fact that everybody who was invited came and I could celebrate with everyone, and overall it was a beautiful night. A lot of people thought like it was a collaboration. It was not. I paid for that shit, okay? I paid for the food and drinks and everything, and it was amazing food. Which camera do you use for YouTube? So for my vlogs, I use the Canon M50 Mark II. For my beauty videos, also sometimes I use that camera but with 50mm का lens. And ये जो camera पे ये video recorder है वो अमित का camera है, that is Sony A7 III Mark III A7 III. But वो lens change करते रहता है as per the requirement. I'm going to do lipstick just to understand कि where is my look headed. My mascara and all is left. Ora Doro Beauty's Vino lipstick, it's a new one. अभी मुझे PR में आई है. I want to try it. Beautiful color, दिख बहुत सुंदर है. Oh wow, I love the color. Wine shade and true like जैसी bullet में उससे काफ़ी dark है actually. मुझे लगा थोड़ी pinky होगी. I think I'm going to neutralize it, but पहले I'll do mascara. Why are you so much obsessed with high-end brands? To be very honest, I'm not obsessed with high-end brands. If I was, then अभी तक चाहिए होता तो मैं अपना लुई विटॉन, डियोर, प्राडा सब खरीद के वो ही यूज़ कर रही होती इफ़ आई वांटेड. आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद इट, बट आफ्टर अ पॉइंट आई एम जस्ट लाइक I can buy it if I want. तो अगर मुझे कुछ अच्छा लगा then I'll buy it and I'll mention it, which is also one of the reasons somebody asked me कि have YouTubers reduced making haul videos and lifestyle YouTubers का content बहुत बदल गया, haul videos इतने नहीं आते, भी vlogs ही आते. It's because when we share haul and what we buy, it's very difficult for the audience to relate because not everybody can afford high-end brands, which I understand. And then फिर सिर्फ hate आता है, तो हमको भी खरीदने की खुशी नहीं मिलती है because people cannot relate or be happy about it. And the other person cannot buy it also. तो रेफरेंस भी नहीं मिलता है, रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी मर जाता है और हमारी खुशी भी मर जाती है. तो इसलिए हॉल वीडियोस बनाना बहुत कम कर दिया, मैंने भी कम कर दिया. अभी मैं कुछ कितनी सारी चीज़ें खरीदती हूँ और वो बस मेरे कबर्ड में है. कभी व्लॉग में मैंने दिखा दिया, कोई वीडियो में पहन लिया, या गेट रेडी विथ मी शॉर्ट्स में आई मेंशन विच एवर ब्रांड आई एम वेयरिंग. एंड इन गेट रेडी विथ मी वीडियोज अ लॉट ऑफ यूर लाइक ओ ब्रांड की दुकान, ब्रांड का सब नाम ले रही है. आई टेक नेम्स सो दैट इफ यू ऑल वॉन्ट टू बाय you all get reference. Why else would I take names? मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है. अगर if I get that same dupe in Hill Road भी मैं खुशी खुशी खरीद लूँगी. अगर मुझे कोई branded भी देगा तो मैं खुशी खुशी ले लूँगी. It's at this point for me it's just कि I'm okay with anything. If I feel like ये मुझे बहुत अच्छा लग गया then I'll get like the Michael Kors bag. मैंने कितनी जगहों पे देखा था और चाहिए होता तो मैं इंडिया से भी ले सकती थी, मैं यूरोप में भी ले लेती थी, मैं कहीं से भी ले लेती थी जब मुझे अच्छा लगा था. बट आई जस्ट वेटेड टू गेट द बेस्ट डील ऑन इट एंड इन सिंगापुर में मुझे बहुत अच्छी डील मिली तो मैंने ले ली उस पर. लिटरली वॉट इट इज़ फॉर मी. आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद इट. इट्स बिकम अ नाउ इफ आई लाइक इट आई वॉन्ट इट आई गॉट इट वाला वो आरियाना ग्रांडे का गाना है, वैसी हिसाब हो गया. I'm using the Essence Lash Princess mascara. You guys, this is the best mascara ever. It's not waterproof. You get a waterproof version, but it's so good. Like, look at the difference. This and Maybelline Sky High is the mascara of the year for me. And Max Stack mascara. वो खत्म हो गया है मेरा. For my lower lashes, I'm using the Maybelline Sky High mascara. Okay, I'm going to quickly spritz a little bit of the Faces Canada mist. And that will just lock my makeup in place. I think I'm going to do falsies and also neutralize my lipstick थोड़ा सा. आप कभी पाकिस्तान नहीं आओगी, आपको पता नहीं होगा, बट यू हैव सच अ गुड फैन बेस इन पाकिस्तान. मुझे पता है. आई लव ऑल ऑफ माई पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स बिकॉज मुझे एनालिटिक्स दिखते हैं यूट्यूब पे कि इंडिया के बाद माई नेक्स्ट फॉलोइंग इज पाकिस्तान. अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स ऑल्सो से दैट यू नो मच लव फ्रॉम पाकिस्तान. एंड व्हेन आई मेट मोमिना एंड शावीर ऑन यूट्यूब समिट, तभी मैंने उन लोगों को बोला भी था कि आई हैव अ वेरी बिग ऑडियंस फ्रॉम पाकिस्तान, आई वुड लव टू कम. बट उसका वीज़ा का देयर इज अ सिस्टम एंड अ प्रोसेस. आई कांट इवन सेंड शावीर माई कॉफीज फ्रॉम इंडिया to Pakistan like directly. You can't just send courier like this straight away. There's a lot of formalities with visa and all this politics, logistics that you have to deal with. But I wish that it was that easy कि flight पकड़ो और निकल लो. तो I would definitely, you know, I love traveling. So someday when I can, I will visit. Okay, I'm taking the PAC Cosmetics Timeless Matte Liquid Lipstick in Nutty Doodle, and it's a nice nude color. So it will neutralize this wine shade quite a lot. I'm just gonna put it in the center.
Take my fingers. What's new with SAS Enterprises Private Limited? Any surprises? Nothing so far. मुझे Private Limited बना के रखनी थी ताकि काफ़ी formalities is different for proprietors and Private Limited when it comes to taxes and all. Just in general, having a Private Limited company secures Impulse Coffee का future a lot. And I'm like first year में, in the first 6 months also I would say कि I was just like experimenting with Impulse. I was sure I was going to do it, but I was like पता नहीं कहाँ जाएगा, बहुत risky है ना. Like I am passionate about it, but लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों को पसंद नहीं आया, खरीदे नहीं, बिजनेस ठप हो गया तो क्या. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वेंट फॉर प्रोप्राइटरशिप. इट वाज अ सेफ ऑप्शन, बट वंस आई वाज मोर श्योर ऑफ इट एंड मोर कॉन्फिडेंट कि ठीक है व्हाट आई एम डूइंग मेक्स सेंस, तभी आई वाज लाइक ठीक है प्राइवेट लिमिटेड बना लेते हैं एंड फिर आगे देखेंगे. देन आई हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू विद द कंपनी आई कैन. There's no surprise so far. I'm just working towards Impulse Coffees as one brand under SAS. Just one thing I would like to say: when YouTubers become rich and famous, they change. You are pure till now. Please be the same. Don't ever change. You're perfect. Trust me. Look, this is a compliment, so I would thank you. But also, I don't think it's wrong to change in general also. Change is a part of life. सब लोग को आगे बढ़ना है, grow होना है, and you have to change certain things about yourself. You might have toxic things that you might want to change. You might want to grow for the better for yourself, for your family. अलग reasons की वजह से I'm very grateful that you still find me the same. I get a lot of comments that people don't find me the same also. So सबका perspective अलग होगा. But I genuinely feel like सबको with time evolve होने की ज़रूरत है. It's good to change. It's not a bad thing. I don't know why people see change as a wrong thing. Change is a part of life. You have to change with time. Did you become used to the new SSS? I think yeah, by now I can say that I'm used to it. Nothing but to say stay blessed and work hard till the end. God is there with you always. Thank you so much. Love you. Just going to add lashes to my look because थोड़े खाली खाली लग रहे हैं. मेरे favorite lashes for this year have been Henna Beauty, and trust me, if you want good lashes for any wedding season, you have to go to them. I have so many, but I think today I'm going to use Shiza. I could be wrong with the names because currently मैंने सारे lashes अलग अलग डब्बे में डाल के रखे हैं. So just go on their website और जो भी आपको अच्छे लगे you can get those. Alright guys, मैंने थोड़े फॉल्सीज लगा लिए हैं, वेरी ड्रामेटिक एंड मेड दिस ग्लैमरस लुक ऑल कंप्लीट. सारे ही प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किया, आई नो आई डिड नॉट स्पीक इट आउट इन द वीडियो, बट वो व्यू प्रोडक्ट्स की सेक्शन में आई विल टैग ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर योर एनीथिंग दैट यू वांट रेफरेंस फॉर. सो यू विल बी एबल टू शॉप इफ यू वांट टू मेक योर मेकअप किट फॉर द वेडिंग सीजन, शादी सीजन, बर्थडे सीजन, जो भी सीजन के लिए खरीदना है. एंड आई ऑल्सो लव्ड चैटिंग विथ यू ऑल आफ्टर सो लॉन्ग. देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, मैडनेस, कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, बट आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कुड एंड गिव यू like a summary and life update of the last few months of my life. करते रहेंगे ऐसे Q&As. I love very wholesome to just sit down, do my makeup, old school YouTube and chat with you all. ऐसे लंबे videos अभी ज़्यादा views नहीं आते हैं, but मुझे करने बहुत मज़ा आती है और हमेशा मज़ा आएगी. If you like this video, don't forget a big thumbs up so that I'm motivated to do more of this for you all, just chat with you all. And for today's video, Sarah's code shout out goes to Tamanna Sheikh. Thank you so much, Tamanna. Today is also my best friend Tamanna's birthday, and you have named every one of my Vlogmas episodes. I read your comments every day and it's my favorite comment of the day because उसने सारे मेरे Vlogmas videos का सर नाम और टाइटल दे रखा था. बड़े मजा आया मुझे आपके comments पढ़ने में. So thank you so much. If you want to be a part of next video, Sarah's Code shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sarah's Squad, and it's part of my next video, Sarah's Squad shout out. I'll see you guys very soon in another video. Bye guys, love you. Mwah. I've been longing to hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.